आई हैव डिसाइडेड नॉट टू एडिट दिस वीडियो एट ऑल, और ये जैसा है वैसे ही जाने वाला है। ये मैंने टाइमर रेडी करके रखा है, तो मैं देखना चाह रही हूँ कि बिल्कुल नेचुरल मेकअप पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट से कितनी देर में मैं कर लेती हूँ। सो लेट्स बिगिन। मैंने सब सामान रेडी कर दिया है, मैंने अपनी स्किन को प्रेप भी कर लिया है पहले, एंड आई विल बिगिन विद अ सनस्क्रीन। So this makeup is such that it can be worn by anyone, anywhere, anytime. Natural makeup जो है ना उसका यही फायदा है। एंड आजकल because I will not say this is a trend, but yes, everyone is promoting to be in your own skin. And yes friends, I have not applied any filter today while shooting, ताकि मेरे अगर marks freckles हैं वो भी थोड़े नज़र आ जाएं, and under eyes अगर है वो भी नज़र आ जाए, मेरी skin जैसे है वैसी नज़र आए, and you all can see the change basically. Okay, so ये हो गई sunscreen, and next is a primer, any primer you all can take. ये मैंने लगा लिया प्राइमर, एंड प्राइमर अंडर आईज पे नहीं लगाते हैं, just on the whole face and neck area. Done. So next is okay, मैं सीसी क्रीम में काफ़ी बिलीव करती हूँ। आई मीन आई लाइक सीसी क्रीम अ लॉट, या फिर बिल्कुल टिंटेड सनस्क्रीन्स अच्छी लगती हैं मुझे फॉर अ वेरी वेरी नेचुरल लुक। तो ये मैं लगा रही हूँ अभी, और आज मैं जिस तरह से लगाने जा रही हूँ, आई से दैट it is not exactly the right way, but it is not the wrong way either. If you are in a hurry, time कम है, कुछ है, तो फटाफट डेली मेकअप में लगा सकते हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म योर स्किन। अब जिस तरीके से मैं करूँगी हार्मफुल नहीं है। तो सबसे पहले जो है मैंने अंडर आइज में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐसे डैप कर दिया, ताकि मैं बाद में उसको आराम से स्मूदन आउट कर दूँगी। एंड ये देखिए, आई जस्ट अप्लाई लाइक दिस विद वेरी वेरी लाइट हैंड्स। जी, मेकअप इज़ एन आर्ट, मुझे ऐसा लगता है आर्ट है। जैसे कई लोग ब्रश से पेंटिंग करते हैं, कई लोग हाथ से करते हैं। सो व्हाई नॉट कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। एंड रेगुलर मेकअप के लिए, जो डेली मेकअप है ना, उसके लिए मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा। स्पेशली पीपल लाइक मी हु हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स on hand. I mean, a lot of work on hand. Like, I don't want to miss on my son's studies, और बाकी चीज़ें भी घर की थोड़ी मैं देखती हूँ, बिकॉज आई हैव दिस हैबिट ऑफ सुपरवाइजिंग। आई थिंक ऑल वुमेन हैव दिस थिंग, और काफ़ी काम मैं खुद भी करती हूँ। एंड देन आई हैव टू शूट माई यूट्यूब वीडियोज़ ऑल्सो। तो सारी चीज़ें देखते हुए, देन एक्सरसाइज, मेडिटेशन, माई एक्सरसाइज सेशंस सो मच इन हैंड, सो आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम इन मेकअप। हालांकि बातें करते करते मैंने थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लगा दिया है। ओके, एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू नाउ, कि मैं जो है वो भूल गई हूँ टाइमर ऑन करना, लेकिन ये वीडियो जितने मिनट का है, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग फॉर एडिटिंग, तो पता लग जाएगा कि कितनी देर में मैंने मेकअप किया था। ओके, सो दिस इज़ अ टिंटेड पाउडर विच आई एम गोइंग टू अप्लाई. So this is, I have a wheatish complexion. I'm not too fair, and I love my complexion. I just love my skin. So this is a nice tinted powder which I'm just going to apply wherever I need it. Okay, so it's very humid in Mumbai right now. बारिश हो रही है और काफ़ी humid weather है, तो थोड़ा सा my skin tends to get oily. It is not oily now. Now when I'm in my 40s, तो ये oily नहीं है, लेकिन it tends to get oily. And also friends, young girls can also easily do this makeup. कोई भी इस makeup को कर सकता है. It's absolutely safe and tried and tested by me over the years. This very daily natural look kind of thing. In fact, आप नए हैं मेकअप में तो बाहर भी जा सकते हैं. तो अंडर आइज मैंने थोड़ा सा कोशिश करके अच्छे से बिठा दिया है. Okay, so this is done, and next is okay, so I use one thing for my eyebrows also and for my eyes also. I don't buy many things. तो ये जो brown eyeshadow है, ये ही dark brown eyeshadow से I'm filling my eyebrows, and because it's a very natural makeup, I'll go for nude shades for my eyes. Okay, so this is done. And the other side,
just filling in where I find the hair a bit scanty. Okay, this is also done. Okay, now the same thing, the dark brown eyeshadow I'm just going to apply here below my eyes, because ये मैं नीचे नहीं लगाती हूँ तो बहुत अधूरा सा लगता है, and I don't get that impression of deep eyes. Okay, I'll just spread it here. I have this habit of smudging with my fingers. I keep smudging and I love using my fingers for makeup actually. एक तो fingers की warmth होती है, and secondly बहुत अच्छी blending होती है, plus hygiene factor. My God, मतलब brushes फिर every day I'm not cleaning them and washing them or cleaning them with a cleanser, the brush cleanser, but कुछ रह जाता है उसमें, मुझे ऐसा फील होता है. ओके सो काजल, लेट मी थिंक. ओके, आई एम गोइंग टू चेंज. ये कपड़े नहीं है बट मेकअप ऐसा है कि मैं कुछ भी अभी पहनूंगी तो चल जाएगा. सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं क्या पहनूं, बाद में सोचती हूँ. चलो लेट मी कंप्लीट दिस थिंग. ये थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है. ओके सो लेट मी डू अ क्विक फिक्स कि ज़्यादा हो जाएगा तो व्हाट वी कैन डू. तो आई एम टेकिंग वन कॉम्पैक्ट, एनी कॉम्पैक्ट यू ऑल कैन टेक, एंड जस्ट विद द ब्रश मैं ये कॉम्पैक्ट नीचे लगा दूंगी. इससे फ्रेंड्स हमारा काजल भी फैलता नहीं है, यू ऑल नो दैट. सो दिस इज़ वन एक्स्ट्रा स्टेप जो आज ऐड हो गया, जो कि मैंने सोचा नहीं था अभी मैं करूँगी, ज़रूरत पड़ेगी, बट समहाउ कभी कभी हम मेकअप कर रहे होते तो कुछ कुछ चीज़ें फ्लॉज होते रहते हैं हमसे. एंड इफ़ यू विश टू यू कैन वेयर काजल ऑल्सो इनसाइड. पर मैं घर पे काजल कभी पहनती हूँ कभी नहीं. इट डिपेंड्स, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन माई मूड टोटली. ओके सो नाउ ओके द सेम थिंग फॉर द आई शैडो. यही वाला पैलेट लगेगा, मैंने ऐसे ही रख दिया. एंड या न्यूड, एब्सोल्युटली न्यूड शेड. दिखेगा भी शायद नहीं, बहुत नेचुरल रहेगा. जस्ट नाइस न्यूड शेड. एंड राइट नाउ आई विल जस्ट वेयर अ नेचुरल लिपस्टिक एंड देन बाद में देखते हैं क्या करेंगे. लेट्स सी. ओके सो वन आई इज डन. आई एम नॉट वेयरिंग अ हाईलाइटर. लगा सकती हूँ हाईलाइटर दिन में हियर ऑन माई ब्रोबोन एरिया, लेकिन अभी मैं नहीं लगा रही हूँ बिकॉज आई एम कीपिंग इट टू सिंपल एंड टू नेचुरल, लाइक नॉट डन काइंड्स, नो मेकअप लुक आई मीन. ओके सो दिस इज डन. ओके फॉर हुडेड आइज के लिए भी बता दूँ कि आई शैडो ऊपर तक ऐसे लेके जाइए. ओके सो आई गिव माई टिप्स लेटर in some other video. Right now I'm timing it, so let's see. Okay, so this is done. Little bit more. Okay, it's smooth and nice and giving my eyes a deep look. So this is done. Now next is mascara. Let me wear mascara and then I'll decide on the kajal. I don't think so I'm going to wear. अगर कुछ इंडियन पहना मैंने तो उस टाइम पे काजल अंदर लगा लूँगी, बस ये करूँगी. So and this side is almost done. Go for a thick coat of kajal. Sorry, mascara. Okay, see, I'm not editing it so you all can see what all mistakes I'm making in the makeup and what I'm speaking. Okay, तो ये हो गया हमारा mascara. Always in the slanting direction, not like this straight but towards the sides so that the eyelashes are visible. And it should not clog. वो मोटा मोटा नहीं होना चाहिए mascara. वो जो थिक ऐसे अटक जाता है ना, वो नहीं होना चाहिए. It should be like, it shouldn't be less but then it should be thin. Okay, so for my lower lashes I always do this thing. I always touch them with the tip of my brush rather than applying like this. Okay, my tips some other time. Let me finish. Let me see how quick I am. I can also tell my husband then. See, I don't take that much time in makeup and getting ready. Okay, so friends, be happy in your own skin. It's okay if we have marks. It's okay if we are getting wrinkles, crow's feet, जो भी है. We'll take good care of ourselves. हम अपना ध्यान रखेंगे अच्छे से, लेकिन अपने आप को फिर भी उतना ही प्यार करेंगे जितना हम पहले करते थे, यंग एज में करते थे, या अगर यंग हैं तो अभी करते हैं. हम अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि आगे चल के भी हम अपने आप से उतना ही प्यार करेंगे. ओके,
सो दिस इज इट. बिकॉज क्या है, हमारी सारी जो हमारा जो कॉन्फिडेंस लूज होता है ना, देखो थोड़ा सा गिरा दिया मैंने मस्कारा. आई एम जस्ट डैबिंग इट माई फिंगर विद माई फिंगर. अच्छा ये हो गया, निकल गया थोड़ा सा जो मस्कारा था. इफ आई फील लाइक आई विल वेयर काजल, आई डोंट नो. ओके चलो ब्लश ऑन करते हैं अब. एंड नाइस पीची पिंक ब्लश ऑन. एक्चुअली दिस इज माई डेली मेकअप. मैं जो करती हूँ ना रोज़ घर पे, या घर पे ऑल्सो आई कीप शूटिंग, नहीं भी शूट करूँ तो भी आई फील आई लव डूइंग मेकअप. एक्चुअली आई थिंक आई विल वेयर मेकअप टिल आई एम 100 इफ आई एम. अगर मैं 100 की भी हो जाऊंगी ना तभी भी आई विल वेयर मेकअप. आई विल वेयर माई फेवरेट रेड लिपस्टिक. ओके तो मैंने कुछ फैला दिया यहाँ पे, थोड़ा सा फैल जाता है. एंड स्पेशली आई एम अ लिटिल, थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है बिकॉज इट इज़ बीइंग टाइम्ड. सो ओके टाइम, बट इतना ही टाइम लगता है वैसे भी. ओके हाईलाइटर इज ऑप्शनल. आई एम नॉट वेयरिंग इट राइट नाउ. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई अ लिप. ओके वो मेरे पर्स में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम. Either it is a lip balm like this which I'm going to apply, or a little bit of gloss. I cannot find the gloss right now. I'm wasting time in finding the gloss. I want the gloss. I want my gloss fast. I want my gloss. I don't know, I'll just try it once. I want my gloss. Where is it? I'm on camera, I'm not editing it. I want my gloss. Gloss. Okay, I don't know where I've kept my gloss. Oh, it's here in front of me. Table पे ये, I mean dressing table पे ये. It's here. A very natural gloss. कुछ गिराया मैंने. Okay, lip balm गिरा दिया. That's very nice. This is also nice. Okay. So ये हो गया my very natural. Actually एक साइड पे मेरे फेस पे लाइट आ रही है विंडो की. आई एम डन. एक्चुअली आई एम डन. विंडो की लाइट आ रही है, दूसरे साइड पे नहीं पड़ रही है. सो यू कैन सी द डिफरेंस. बट आई जस्ट लिफ्ट द कैमरा एंड आई ट्राई टू शो यू. सी थोड़ा सा कुछ दिख रहा है. ओके सो दिस इज माई लुक एंड आई एम रेडी. दिस इज द सुपर क्विक एंड सुपर नेचुरल लुक. ओके सो जस्ट लेट मी ओपन माई हेयर. मे बी आई लुक अ लिटिल मोर बेटर. ओके so this is me. I'm ready. I hope you all liked it, friends. So please write in your comments, how did you feel about this pocket friendly quick look? And I cut it.